Namaste. Good evening. I'm Jyothi. Um, we'll start our today's knowledge sharing session with the Shanti Path. Gently close your eyes. Sanavavatu Sanau Punaktu सह वीर्यं करवस्विनावदितं शावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I'm Jyoti here. Yes, it's something very interesting. We generally talk. Um, let me share my screen right now. I hope my screen is visible. Okay. The plan. Jyoti, we can't hear you. I can share the screen, but you can talk if you can talk it loud. Am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Yeah. I'm sorry about I'm the sorry for technical glitch. There is some issue with the system here. So we will be talking mostly on the mental is important and whose mental health are we referring here. Before we get into the details of it, in understanding it even more uh, in the broader sense, let's have a look at what the meaning, what the United Nations speaks about the definition of mental health. So, according to the United Nations, it is about an individual's physical well being, mental well being, and social well being. So, what is this emotional well being and social well being that we are talking about? Emotional well being is that something that we are able to manage our own emotions. Like, for an example, if there is a
there is a misunderstanding or a quarrel between the husband and wife. Um, Preeti, can you move to the third? Both of them goes on. In anger, they may say words, and nobody's no emotional well-being there. There's no balanced state of emotions. And you would have seen in scenarios where if there are two people quarreling, the second one will immediately jump up and say, okay, I'm sorry, you take a break. Or that person will just quite important to understand. It's always important to leave that place for a moment or take a pause. Even if it is not their fault. मेरी मुझसे गलती हो गई. Reason they are saying शांत हो जाओ is not to say that I am submissive or like I'll take the blame, but it is to bring in some balance in the emotions so that they are able to build or maintain a healthy relationship there. Yes. Now, what is the psychological well-being? You should psychological well-being is nothing but you feel good about yourself. You feel content about your life. You have very good feeling about your the very purpose of your life, the life that you're living. The living. And it is so important because um, if we don't feel that contentment in us, and we always feel, oh my god, I don't have this, I don't have that, always nagging, then and you feel you're not worthy of anything. अरे मैंने क्या पाया है जिंदगी में, मैंने किया क्या, मैं करूंगी क्या, going on like that, that means you're not valuing your, there is no psychological well-being in you, you're not feeling happy about the very existence of yourself and what you're contributing towards people who are around you. And when I say people around you, that's where the social well-being also comes in. It is like you care for your people around. You start building relationships with people. It's a very positive relationship. You have your team. You have your group always in place. You talk about each other. Like Bioenzyme Academy, there are a couple of us. Apart from our official work, we also connect with each other one-on-one to check on our well-being. How are you? Your health is bad. I felt so good. Couple of months back, I was quite down, and my health had taken a little big toll on me. And receiving calls from people, Yogini would just call and ask, how are you doing? Swati was there. She would call and ask me. Ashmita, Preeti, Prachi. There are many people who call and check on your well-being. You feel good. Oh my God, there are so many people who really want to connect with me. They feel good about me. And it feels nice. When you become happy, then you start feeling to connect with others also, isn't it? So this is called the social well-being. So we cover the entire definition of um, the United Nations definition about who is a mentally healthy person. So let's go into some of the factors that actually affect our mental health. What are those factors? Sorry. Many places, if we look at, um, 2 or 3 decades down the line, um, generally the phrase that is used when you are in distress or somebody is behaving a little away from the normal behavior, so-called normal behavior. When I say normal behavior, expressing your anger, expressing your emotions is also normal behavior. But when people, is in distress, they felt this was abnormal behavior.
So they would brand that person as mentally off, mental है वो, पागल है वो. And we have heard all this terms that has been, or people being branded. There are scientific proof which says that this could be a reason. Maybe it is coming in the family history. It could be genetic, so that it would have passed on to generations after generation also. There are possibilities. And it also, if you look at even the environment that one is in, can affect your mental health. If I can say, like, jobs like in the armed forces, constantly you are on the borders of the country, protecting the country, day in and day out, sleepless night, leaving their families away. They go through a lot of distress and isolation. The pilots who fly our planes, who carry more than 300 plus passengers to, from one continent to another, the amount of distress that they go through, it's quite high. I mean, why talk about armed forces or even pilots? How about even us, even at home? If there is a financial hardship, then immediately, then we tend to, like, break our head. Oh my God, what do I do? How do I manage? Then there is somebody always coming and telling you, it's okay, you pause. There may be a way out of it, right? And this mental health issues, the factor that can affect mental health is also a medical condition. So what happens is sometimes physical health can take over your mental health or your mental well-being, your brain itself. Like if you look at, um, I'll give you an example of somebody, a male person in the family, a father, who's been working day in and day out to take care of his family, his children, their education, their marriage, settling them in their life, all that he has done, sacrificing his own likes, dislikes, joy, happiness, peace, everything, even food or clothing. Um, but what happens? A day comes when the place that he's working, they ask him to saying that you are done your work quite fantastic and it was amazing. But I think now is the time that you go and rest well. Retirement life. Many people after retirement, I've seen that, um, they feel that I'm totally worthless now. Nobody trusts me. Nobody, acknowledges my contribution. They're not very happy. They feel that I'm a burden in the family, isn't it? And that, what happens is they are not able to move around the way they used to move around. They would sit in one place. Here, I want to share about my father. Something happened in the family, within the immediate family, and uh, my father took it too heavy on his heart and he went into depression. A man who served in the Indian Army for many, many years, was very active. His day would start at 4 in the morning and he would close his day at 9 p.m. every day. And that is what our schedule was, even till 8 or 9. That's only on Sundays we are just allowed, So when he went into depression, slowly he had cut him off from all his friends, relatives, his own children. Even when I go there, he would only say, hi, how are you? That's it. He didn't have anything else. Wherein, if it was his previous version, he and me would fight over movies, sports, politics, anything, any subject. We'd literally get into it. The home will be a war field, and my mom would say, oh my God, the father and the daughter, they really create havoc at the home. And then slowly he became immobile. He was not able to move around. He couldn't move his limbs. And that's how slowly he passed on. So why I'm stressing on all these aspects? It's very important to understand mental health in the right way. And let's look at some statistics. See, about 15% of the population experiences mental health condition.
And this is the survey conducted by the Nimans of 2015 and 16. Now, let me tell you one more thing. This is quite sad to hear that the latest report that we have belongs to 10 years ago. After, which means post 2016, we have had COVID. COVID brought in so much of distress in people, a lot of fear, a lot of deaths. So we do not have anything in place which can measure the distress of individuals in communities, and there's no report against what COVID brought in. It shook the whole world. So the next thing, if you look at, there is high rate of suicides, especially among the young people, and this is mostly linked with the mental health. Even slightest distress, discomfort, they are not able to manage. I think our communities are becoming very secluded communities. And this data, we get it from National Crime Records Bureau. And very important aspect, if I want to mention over here, is avoid seeking help simply because when I open up about my life, will I be judged? Will people have preconceived notions about me? And they may bracket me, or they may label me saying that she's mad, her head is not in place. That is one stigma which is there in our country, which it is like a barrier, and it doesn't allow people to open up about their feelings, whatever they feel, or even ask for help. And one of us have to play. Well, when I said healthy me, I need to be quite healthy, right? It could be physically, it could be mentally, psychologically, socially, in all aspects. Only then can I do my bit of work, the purpose that I've come here, only then I'll be able to accomplish that for my family, for my, my neighborhood, my society, country, and in the larger scale of the universal brotherhood. For that, it is very important that we take care of our mental health. We need to improve our overall well-being. We need emotional support. We generally use this phrase, yeah, moral support. I need a moral support from somebody. I need somebody to just sit by my side. कुछ नहीं, कोई तो phone करके तो पूछ ले. When we are upset, we call, no? We call our spouse, or we call our children, or even parents. Phone तो करके पूछ लेते मैं कैसी हूँ. Isn't it? Even in anger, we ask that. Yes, we need to create a support system for our emotional well-being. Taking care of our physical health is very, very important. You know that every day there is something new coming up, some new disease, some new virus. So our health is in our hand. We need to take care of it. Which means only when we take care of our health, we are fit and fine, we will be able to produce more of information, be more creative, and we will be able to have a focus on what we are doing. Let's say we're all working on bioenzyme. Bioenzyme teaches us one thing. The 90 days period is like a pregnancy period of a mother, right? Whatever is going on inside, it's not much visible what the compound, the molecules do there, or the microbes do. They really don't know. Maybe some of things in bioenzyme that we can see is the release of gas. You can see something white getting formed. Maybe there are maggots formed, isn't it? There is then slowly all the peel starts flowing on top. All that is there. Similar thing happens with the pregnant mother. But then what happens? You need to wait for that 9 months or 10 months.
Same thing with 90 days of 1 is to 3 is to 10. Only then you get the right results. Similarly, here, only when we take care of our health, we will be able to do the work that we have promised ourselves that we will do for our mother nature, isn't it? So that's very, very important. And what happens when we do that? When I say take care of your physical health, your mental health also, which means, I remember my teacher always saying, that given any situation, we should be able to be like a lotus leaf. If you see the lotus leaf, how much of water you pour in there, it'll never remain. It may remain there, but you will feel that there's a pearl actually going around, isn't it? It will not wet the leaf like any other leaves get wet. This will never get wet. Though the presence is there, but again it is detached, right? So we need to create our own coping skills wherein which helps us in resilience. Anything happens, धक्का नहीं लगना चाहिए हम लोगों को. It shouldn't shake us. हाय रे, एक फिल्म देखा, बहुत हम लोगों ने देखा, बचपन में देखा होगा या अभी भी देखा होगा कि जब हम लोग कोई मूवी देखते हैं, मैंने देखा पिछले हफ्ते किसी तारी जमीन पर फिल्म देखने गई थी, वहां पर कोई बैठ के एक मदर वहां पर बैठी थी, बहुत खूब रोने लग गई वो, इतनी रोने लग गई. I think she was going through something, was able to relate her life with that, or maybe somebody whom she knows is going through that kind of a phase in their life, and she was crying. I'm not saying crying is bad, but I'm saying, can we strengthen ourselves? Can we become a little more resilient? Wherein these aspects, yeah, it feels good, but it passes through. You're not stuck there, right? Because day in and day out, each one of us are going through life's heavy challenges. And these challenges may be small, may be big. But the one who is going through the challenge only knows whether it is big or small for anybody and everybody. Your, your pen, I mean, is broken. Recording in progress. Or the child's pen is broken, then the child comes and cry, says, oh, usne mera pencil tod diya, goes on crying for, hours together, right? But then what happens is after some time, it mellows down. Why I gave this example is, for us, it may look like it's just after all a pencil or a pen, but for the child, it is something big, isn't it? So, what happens? And if we are going on, if we are going to keep hoarding our, pressurizing our head so much, then the outburst will be that a lot of anger, a lot of emotions will happen, which is definitely going to hamper our relationship within our home, our communities, anywhere, even workplaces. So it's important to take care of our mental health. And, but yes, there are medical conditions which you cannot do anything. But if there are signs visible that there is a need for an intervention, then I think early intervention will definitely help in not prolonging this issue further, right? And it also, if we are able to take care of our mental health, then the longevity of our life, there's extra bonus that we get from the creator, right? Well, here I would like to pause and just check with you if you have any questions, anything that I could, explain. Many of you must have attended this session previously also, but just in case you have anything that you want to ask, you can ask, or I can just continue with it. Okay, here I would also like to just mention a couple of things. See, it is very, very important that we start recognizing mental health concerns. If you see that Jyoti has been talking, she's the most talkative person, and all of a sudden I become quiet, I'm always sad. There's a lot of worry in me, there's a lot of fear in me.
then it is a sign that this person is not okay. This person is not feeling good. Maybe extensive eating or totally no eating, or maybe extensive sleep or totally being awake throughout the night, not being part of any social activities. Maybe difficulty in, like, no, I wanted this, but then should I choose this college or that college, or maybe this job, or even this dress should I wear, not wear? So a lot of confusion in making decisions. A lot of confusion in making decisions. A lot of thoughts about self-harm or suicide. It's a major concern. Why I am sharing all this? Definitely, maybe many of us, this topic may not be very useful to us, but definitely, if we understand this, it will be used for somebody else, somebody whom we know, or somebody we are watching. It could be at your workplace, your home, your apartment complex, any child there whom you have known, and you see these signs. I think you will be able to help the child in a better way. So it's very important for us to recognize these mental health concerns. I would like to move into some of the myths about mental health. Um, Generally, people say when you talk about your emotions, when you talk about I'm not feeling good today, this is what happened. Generally, people say that it is an indication of weakness. You are a weak person. No, the actual fact is that mental health condition can affect anybody. Anybody. They say only one thing. When I keep asking them, how about conducting surgeries and etc., they say, like, well, I can do it on anybody, but not my wife, not my child, not my parent. It brings in a lot of fear in me. So that is also a mental health condition, which means it is obvious that anyone can have fear of height, or anyone can have fear of speed, or anyone can have fear of people can have fear of height, or water, or speed, or anything for that matter. It is okay to have those kind of indications. It is okay, but that is not, it doesn't mean that these are all surveys that we have conducted, and through the survey we got these responses, and that's how we have converted that into myth and fact. So they also say, like, children don't experience mental health problems. Mental health issues can affect any child, any person, small, big, old, anybody for that matter. We need to be very careful about that, and we need to understand it. When there is somebody coming and talking about their discomfort, distress, emotions, all that we need to do is just sit patiently, listen to them. Yeah. And there's also something called therapy is only for severe cases. Of late, you would have seen, last 2 decades, there is sound therapy, that is happening. There is water therapy that is happening. There are psychologists who are doing a lot of intervention therapies. It is nice to have these kind of therapies because it benefits immensely. I have gone through many therapies in terms of, it could be sound therapy or even sleep. I've had sleepless nights. And when I took some of these therapies, I felt there is magic on your head. So we have spoken about how you need to take care of your physical connections. There are two things that you can actually do out of this. Already explained. But I think many of us, especially in India, we women have not been taught to say no. And I think we need to learn to say no. Now I say, it's just not women, it is also men. We don't say no at the right. वो बुरा मान जाएंगे, मैंने किया नहीं तो बुरा मान जाएंगे, क्या करें? उनको खुश रखने Recording. हाँ में हाँ डालते रहते हैं और पूरा बोर
बोझ जो है अपने सर पे डाल लेते हैं. I think is also setting our own boundaries, saying that I'm sorry, I won't be able to do this. I have other commitments. That's it. When you say no, you are standing up for yourself. And with all this, yes, there are many things that we don't have if we count. But when you totally topple the other ways and see, they say, the other side of the hill is always greener. Because you're standing here, we have not seen it the other side. Only the person who's living on the other side will know how green it is, right? Similarly, we also have to just slowly list down. We have a gratitude jar at home. So what we do is we write all those things that I'm very happy. I feel, I'm grateful for. Three things every day, just put it in the jar. Whenever I feel low, I just pick it up and read. I have a roof over my head. I think, oh, yes. In Bangalore, we have had last 2-3 years, we have been having floods in Bangalore, which I have not seen it in my childhood. Then I realized, oh my God, there are many people who do not have a roof over their head, isn't it? But I'm lucky. I got educated. I've done my college. Many people do not have that. It's like that story. Somebody says that, oh, I want a Mercedes Benz. And, but the other guy who's looking at it, who has only a scooter, he says, okay. And then the cycle, if you go backward again, there is a guy who's with this bicycle who says, I wanted a bike. And there's a guy who's walking, he says, at least he has a cycle. I don't have one. And then the guy who's walking is seen by another guy who's sitting on the roadside with no legs at all. So he feels like, oh my God, that man is somehow special. These are some of our sounds. If we start practicing this gratitude itself, these are some of our self-care tips that I'm talking about today. And yes, there is something that I want to go back. Slide number 8. It speaks about psychological first aid. Why psychological first aid? Um, Psychological first aid is nothing but like the immediate first aid. कोई गिर जाता है, चोट लगती है, आप क्या करते हो उसको? थोड़ा कॉटन लिया, उसको रुई लेके पूरा एकदम साफ कर दिया आपने, उसके बाद कोई मलहम लगाया, नहीं तो एक प्लास्टर लगा दी, है ना? वही होता है फर्स्ट एड. डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम लोग करते हैं वो होता है फर्स्ट एड. सिमिलरली साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड करके भी एक टर्म है. मतलब क्या? जैसे पहले हम लोगों ने बात किया था, है ना? कोई एकदम साइलेंट हो गया है, बात नहीं कर रहा है, डेथ हो गई उसके घर में, या एग्जाम की वजह से कोई डिस्ट्रेस हो रही है, हेल्थ इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, एनीथिंग फॉर दैट मैटर. इफ यू आर एबल टू जस्ट गो एंड बी देयर विद दैट पर्सन. मैनी प्लेसेस, जब जब कोई किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, तो आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं आएंगे, बुजुर्ग जो आते हैं ना, कई लोग बात नहीं करेंगे, जो वहां पर बैठ के रो रहा है बस उसके कंधे पे एक हाथ रखा. दैट पर्सन फील सो गुड. वो फील गुड है ना कि किसी ने तो सुना मेरी बात. द वेरी टच सेज डोंट वरी, दिस टू विल पास, वी आर देयर फॉर यू. A hug. When the child cries, comes running to you, you just hug the child and say, "ठीक है बाबा, एक puppy दे दिया," and the child cries and then becomes all right. That minute, the child wanted that hug. Same thing is psychological first aid. Anytime you can actually talk to, if you can just go and express it to somebody, they feel good. You can also take down the numbers of Telemanas, which is run by the Nimans Institute of Bangalore, and Voice That Cares also. These are Telemanas runs 24 by 7. Voice That Cares is 7 days a week, 365 days, 9 a.m. to 9 p.m. Pass on these numbers. There will be counselors on the call, that you can talk to them. वो आपकी मदद करेंगे. तो yes, so far we have spoken about पूरी साइकोलॉजी के बारे में ही बात कर लिया हम लोगों ने. Yes, slide number 11. I have a challenge for you. So, what's the takeaway? Now, if we want our earth to be healthy, then it should start from us. So, we need to be healthy physically, mentally, and spiritually. ठीक है? क्या आप लोग एक
चैलेंज के लिए तैयार हो क्या? म्यूट करके बताइए, वरना अपना हाथ ऊपर करें। जो कोई चैलेंज के लिए तैयार है, अपना हाथ ऊपर करें। अरे वाह स्मिता, थैंक यू। स्वाति जी थैंक यू। ओके तरु जी थैंक यू। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है। ओह यस यस, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। तो चैलेंज क्या है? ये जो सातों स्टेप मैंने बोली है, ये 30 दिन तक हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। कहा जाता है 31 दिन या सॉरी 21 दिन या 31 दिन जब हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे सुबह उठते ही हम लोगों को दांत ब्रश करना होता है ना, तो किसी ने बोला नहीं कि नहीं आज मत करो, इतने दिन इतने साल तो कर लिया, आज क्यों कर रहे हो करके कोई पूछता नहीं है। हम भी तो नहीं बोलते हैं ना, सीधे पहले उठते ही जाके हम लोग ब्रश करते हैं। उसी तरीके से ये 7-8 चीज़ जो है हम लोग करते जाएँगे, 21 दिन के लिए, 31 दिन के लिए, ये हमारी हैबिट बन जाएगी और अपना जो लाइफ़ है एकदम बिंदास हो जाएगा। हेल्दी, वी विल बिकम मोर हेल्दी। वो क्या है? गेट आउटसाइड एंड मूव। ये स्पेसिफिकली मैंने डाला है क्योंकि मैं 7 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मैं घर पे बैठे बैठे, मीटिंग हो कुछ भी हो घर पे ही होता है। और कई कोविड के बाद जब मैं बाहर जाके लोगों से मिलना शुरू हो गया, मेरा एकदम कंफ्यूज होती थी मैं, ये एक्चुअली कंप्यूटर स्क्रीन है कि असली में कोई है वहां पर। जब भी मैं प्रीति जी से मिलने जाती ना, प्रीति जी को ऐसे काटती थी, चोटी काटती थी, असल है क्या, असल है क्या करके। सो वी गेट इन टू दैट वेरी वेरी डिजी, इट्स अ वेरी वेरी फेक काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वी थिंक। तो इसलिए जितना भी हम लोग काम करें, अकेले में उठो जाओ कुछ काम करो, कुछ भी करो, यू you नो know? उसके बाद अच्छी नींद। सब लोग तो बोलते हैं रात 2 बजे 3 बजे तक तो काम करते हैं हम, लेकिन 8 घंटे तो सो लेते हैं। अरे क्या है यार, चिड़िया कबूतर सब तो जल्दी सो जाती हैं, हम लोगों को वही पालन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शाम को 6 बजे आप सो जाओ, लेकिन 10 बजे से पहले तो हम लोग सो ही सकते हैं ना। 10 बजे से पहले हम लोग सो जाएंगे तो ऑब्वियसली 5 बजे हम लोग उठ ही जाएंगे। जो हम लोग को चाहिए होता है उतनी नींद तो हम लोग को मिल जाती है। उसके बाद ईटिंग हेल्दी डाइट, खाने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, जितना हो सके बाहर से अवॉइड कीजिए, क्योंकि देयर इज नथिंग ब्यूटीफुल एनर्जेटिक एंड हेल्दी लाइक आवर होममेड फूड, है ना। उसके बाद प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। व्हेन आई से माइंडफुलनेस, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दैट विल रियली हेल्प यू। हो सके तो जब भी काम टाइम मिल जाता है, दूसरों का भी हाथ बटा लीजिए, है ना। एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो, कोई बात नहीं, इससे तो कुछ तो हो जाएगा। समथिंग वो फ़ोन, मैंने वीडियो कॉल हम लोग करते हैं, ओके एवरीथिंग विल बी फाइन, वो हम लोग रखते हैं, दैट विल चेंज द एंटायर स्पेक्ट्रम। कनेक्ट विद अदर्स, कभी-कभार फ़ोन लीजिए, उठाइए, बात कीजिए। आई हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग कॉल्ड रूस्टर कॉल्स। रूस्टर कॉल का मतलब होता है हफ्ते में 1 दिन, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे, कोई भी एक दिन एक दोस्त से मैं फ़ोन करके, जिनसे बात नहीं किया बहुत दिन से, उनको फ़ोन फ़ोन करके मैं बात करती हूँ। नहीं तो किसी से मिलने भी चली जाती हूँ, किसी बहुत दिन हो गया किसी से मिला नहीं, तो हम लोग जाके उनसे मिल लेते हैं। दैट कैन आल्सो हेल्प यू। सो आई होप यू पीपल विल फॉलो दिस। एंड 30 दिन के बाद मैं वापस आऊँगी और पूछूँगी आपसे कि आप लोगों ने ये फॉलो किया कि नहीं। एंड लास्टली, अपना ग्रैटिट्यूड लिखिएगा। डायरी राइटिंग रियली हेल्प्स। हम लोगों ने नहीं सीखा द बेनिफिट्स, द लॉस, जब हम लोग उसमें डालते हैं ना, बाद में एक एक हफ्ता, 2 महीने के बाद जब
हम लोग पढ़ते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। I think there's some problem with the signals there. गुड इवनिंग डॉक्टर रुचि, Thank आपको पहली बार देख रहे हैं। you very ज्योति, much. your voice is breaking. I thought I'll take over. Okay. Good Yeah. evening, Dr. Ruchi. आप- गुड इवनिंग मैम। Good आज evening. मैं पहली कैसे ज्वाइन आप? कर रही हूँ अभी। बढ़िया, आप बताइए। आपने अभी नया ज्वाइन किया ना, हमारा अपना परिचय देंगे? हाँ जी, हाँ कोई है मैंने। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर रुचि, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डॉक्टर एजुकेशन में हूँ। मैं बीएड हाँ। एचओडी हूँ वहाँ पे, ओके, कहाँ देहरादून। पे? कौन से? देहरादून। उत्तराखंड। कहाँ पे डॉक्टर रुचि? क्लियर नहीं आया आवाज। हाँ, वो थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं हाँ। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाकपत्थर में हूँ, टीचर एजुकेशन में हूँ, एचओडी हाँ। बीएड डिपार्टमेंट। ओके, ओ गुड गुड। अभी ज्वाइन किया है मैंने आप लोग का ग्रुप। हाँ। वो बायो एंजाइम्स तो बना रही हूँ काफी टाइम से, हम्म अवेयरनेस भी करती हूँ, लेकिन अभी मल्टीपल यूजर्स के बारे में अभी पता चल रहा है। पहले तो केवल फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करती थी मैं बायोएंजाइम को ना। हम्म। तो अभी कर रही हूँ, बच्चों को भी अवेयर कर रही हूँ साथ साथ। गुड गुड गुड। और कॉलेज में जाना मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी मैसेज तो जाता ही है, और ये एक कंपलसरी जैसा हो गया है एंजाइम अब। हाँ नहीं, मैं तो बच्चों को अपने जो मेरे टीचर मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं हम्म। उनको मैंने एक स्किट तैयार करवाया उनसे ओके। बायोएंजाइम के ऊपर। और ओह। उसके बाद जैसे अर्थ डे पे हम लोग दो तीन स्कूल्स में गए, तो हाँ वहां पे पहले बच्चों ने स्किट प्रेजेंट किया और उसके हाँ। बाद फिर बनाना सिखाया। तो ओह, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने काफी अप्रिशिएट भी किया। वेरी नाइस। हाँ। आप वो शेयर कीजिएगा, हमारा भी इवेंट होता रहता है तो उसमें इट विल बी रियली गुड। और हमारा भी रिसेंटली हमने एक देहरादून में प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमने गाना भी बनाया है बायोएंजाइम का। सो अच्छा अच्छा। बहुत ही अच्छा बना है, और काफी यंगस्टर्स और बच्चों को बहुत पसंद आया है वो। हाँ 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 हाँ। हमारे यूट्यूब चैनल में है, अच्छा बायोएंजाइम अच्छा। ही करके। हाँ 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 तो हाँ हाँ। इट्स अ नाइस वन। ठीक है, मैं जरूर देखूंगी। और कभी और देहरादून में कभी कोई इवेंट हो फिर ग्रुप से पता चल ही जाएगा अब, है ना। हाँ, अभी ग्रुप तक तो से नहीं पता पता चल चला। जाएगा। हाँ एंड वेलकम टू आवर ग्रुप। आप हमारा विकी ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, उसमें ज्यादा सारे महिलाएं हैं। हाँ और हाँ 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 हाँ। हाँ, और हमारा जो मकसद है वहाँ पे कि एक मेंबर को कम से कम 100 लोगों को या 100 घर को 2 साल में चेंज करना है। या तो अच्छा। बायोएंजाइम बनाए या फिर हाँ हाँ उसमें हाँ प्रोडक्ट्स यूज करें, हाँ हाँ हाँ। ताकि हर घर बायोएंजाइम पहुंच सके। हाँ नहीं, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रही हूँ, क्योंकि इतना हम्म। ज्यादा अपने घर में पहले मेरी मेड को ये होता था कि कहीं मेरे हाथ ना खराब हो जाए दीदी से, लेकिन अब वो कहती दीदी ये हाँ तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, नहीं, गुड गुड। वो मान गए तो सब मान जाएंगे। हाँ 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 हाँ। हम्म, बस मेरे को थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी मैं कि अलग अलग मतलब जो अलग अलग चीजों के बायोएंजाइम्स मिलते हैं बनते हैं ना, उनके यूजेस हाँ। क्या है, ये मेरे को कहीं से पता चल नहीं, जाए। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे ना तो उसमें होगा। और यहाँ काफी ये स्वातिन जो हैं हमारे साथ, इन्होंने काफी इसके ऊपर इलाबोरेट सेशन लिया है, तो सेशंस होते रहते हैं। अच्छा और अच्छा। हाँ, और कोई बुकलेट वगैरह भी है क्या इसकी अवेलेबल? बुकलेट वगैरह भी है। और है हमारे, और कर वहाँ पे दूंगी वेबसाइट शेयर। पे मिल जाएगा काफी कुछ रिसर्च। अभी इतना अपडेट नहीं किया है, बहुत सारे बुकलेट्स हैं हमारे। और जितने भी अभी जुलाई में हम लोग एक और बड़ा वेबिनार कर रहे हैं,
10 घंटे का वेबिनार होने वाला है। ओह, हाँ और हाँ हाँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके करेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये सिर्फ 10 घंटा 2 दिन, 5 घंटा एक दिन का। तो ये मैराथन टॉक ओनली ऑन एंजाइम्स ओके रहने ओके। वाला है। हाँ, बुकलेट वगैरह मैम कहीं से अगर मेरे को अवेलेबल हो पाए तो प्लीज मैं हाँ, मतलब हम चाहूंगी, क्योंकि लोग शेयर करते रहते हैं बीच बीच में, ग्रुप में मैं भी और भेज दूंगी साइट पे भी है। प्रीति हाँ जी। जी, PDF ठीक है पे। ठीक है। हाँ, आप ओके ग्रुप में ही मैम, भेज ऐसे देना भेज। स्वाति जी, ताकि वो हो जाए। ठीक है। आप विकी भी ज्वाइन कर लीजिए, डॉक्टर रुचि। और ठीक है बिल्कुल है ना। श्योर। और हमारा इसमें क्या सेशन होना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो सब का भी हमने सेशन लिया था। तो हम्म। YouTube में बहुत सारे वीडियोस हैं, क्योंकि एक एक सेशंस बहुत लंबे होते हैं, तो उसको हम लोग हमेशा नहीं कर पाते हैं, तो YouTube में डाल हाँ देते हाँ हैं। हाँ। तो उसमें काफी मिल जाता है नॉलेज, है ना। ठीक है, मैं सर्च करूंगी। अभी तो मेरे को नेहा मैम से पता चल रहा था तो मैंने इसको ज्वाइन किया। हाँ। हाँ, नेहा भट्ट मैं मैम अभी से। परसों ही देहरादून से ही आई हूँ, मतलब मैं मसूरी गई हुई अरे थी। तो अभी अच्छा मैं अच्छा अच्छा सोच रही हूँ अच्छा। देहरादून में ना कुछ वो हाँ हाँ रुकने का ढूंढा हमने। तो हो हाँ सकता है हाँ हम हाँ थोड़े हाँ। महीने शिफ्ट करें वहां भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो श्योर अभी मैम, मोस्ट वेलकम। एंजाइम का मैंने आज जो रील डाली है वो वहीं का मसूरी का ही एक्सपीरियंस है, कि जिस एयरबीएनबी में हम रुके तो वो जब जैसे हम एंटर करे ना तो बड़ी स्मेल आ रही थी। तो हाँ 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 हाँ। वो आगे फ्रेशनर स्प्रे करके चला गया, लेकिन उससे कुछ भी स्मेल में मतलब कोई फर्क नहीं आया। फिर शाम को मुझे हम्म। ध्यान आया कि मेरे बैग में मैं एंजाइम रखती हूँ, तो मैंने पूरे घर में स्प्रे मारा। उसके बाद हम डिनर के लिए चले गए, और जब वापस आए तो एंटर करते ही अंदर सबको लगा कि अरे वो तो जो एक बदबू सी आ रही थी वो तो सही हो गई। तो मैं कहा मैं स्प्रे मार के गई थी। तो वो अभी मतलब वही हमने शेयर किया आज मैंने अपना वो ना अच्छा अच्छा, वो। चलिए मैं सर्च करूंगी। बायोएंजाइम एकेडमी के नाम से ही होगा। हाँ हाँ हाँ, उस पे बायोडाटा। है। हाँ हाँ। इंस्टा भी है, यूट्यूब में भी है। ग्रुप में भी डाल दीजिए कीजिए मैम इसके लिंक ना, तो फिर हाँ। इजी रहेगा थोड़ा सा। हम्म, हाँ आप इंस्टा चलिए पे फॉलो कर लो एकेडमी का हैंडल। ठीक है, मैं और करती हूँ। विक्की का भी हैंडल, विक्की बायोएंजाइम ओके। का एक अलग है, मतलब बायोएंजाइम काउंसिल वाला हैंडल, क्योंकि विक्की अच्छा बहुत अच्छा सारे आ अच्छा। जाते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है मैम। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम का मेरे को इशू रहता है ना, टाइमिंग थोड़ी सी कम है मेरा वो जॉब की वजह से। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ मैं। ना? हाँ अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। गुड। चलिए, वेल, तो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मिलते मच मैम। रहेंगे। थैंक यू। ओके मैम, ओके, बाय बाय। ओके। पारुल, हाउ इज इट गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है आपका? It's going good, ma'am. गुड गुड। Doing some background work right now, not in the front. हाँ, नहीं, अभी हम लोग जल्दी करेंगे, बैंगलोर में बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और Uh, है ना। then I will be there. अस्मिता, आपका कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है मैम, एवरीथिंग इज फाइन। गुड गुड गुड। करते रहो, शेयर भी करते रहो। ब्लॉग में भी मैंने बहुत कुछ अपडेट किया है, जिसका जो जो प्रोग्राम का मेरे पास डिटेल आता है उसको हम लोग डाल देते हैं। और कल हमें एटीजी मिल गया। बारह तो को। हाँ, बहुत Wow, मुश्किल था। congratulations. थैंक्स, एटीजी 12 Congratulations. दोनों मिल गया। एंड नाउ ये जुलाई सेकेंड वीक में हम लोग जल्दी करेंगे वो 10 घंटे का प्रोग्राम वैलेंटाइन का। तो वेबिनार होएगा, उसमें काफी लोग आने वाले हैं ऑलमोस्ट। आई डोंट नो हाउ विल आई हैंडल, सम 300-400 तो हैं कंफर्म्ड। सारे फार्मर्स का ही है। बढ़िया। जय श्री बा, कैसे चल रहा है आपका? एंड हाउ आर यू डूइंग, रमेश? Yeah, good. Good. Thank you. या, कम टू ऑफिस sometime. Sure. I have to visit. Yeah. Welcome. Okay. Okay. So it was nice talking, and next week again we'll meet. अच्छा, अभी तो फर्स्ट को भी होगा ना हमारा प्रोग्राम? ओके। ए, आज है ना फर्स्ट, नहीं, आज 30th है, कल है। ओके। ओके। आज तक हाँ, कल फर्स्ट है, कल भी होएगा सेशन। ओके।
Preeti, I और have वो a suggestion. प्रपोजल का हो गया ज्योति जी? कौन सा दिल्ली वाला? Can we stop the recording, Preeti? हाँ, we can हाँ stop the recording. क्योंकि फिर ना उसके बाद मैं एक बार शाम को जाऊंगी हाँ वाइब्स चेक करने। हाँ हाँ, एक बार जाके आइए, प्रपोजल बन गया है, उसको थोड़ा सा शेप दे करके ना, मैं कल एक दो दिन में बात करती हूँ उसे, स्माइली से। हम्म हम्म। ज्योति, you were Preeti, telling I have something? a suggestion. Yeah, I have a suggestion. Yes. For our Monday sessions, let's choose a topic on a Monday evening post session itself. Just pick one or two and freeze it so that we have enough time and coordinating. Correct, it Just has in to be case. planned well. स्वाति, आप इंस्टा पे लोगे नेक्स्ट मंडे सेशन? इंस्टा ये छोटा मोटा तो मतलब वही अपना यही नॉलेज शेयरिंग ना। हाँ, हाँ नॉलेज शेयरिंग कर ठीक है। इंस्टा पे ले लो। अस्मिता, आप किस पे ले सकते हो? आप कंपोस्टिंग पे लोगे? हाँ मैम, ले सकती हूँ मैं कंपोस्टिंग पे। ठीक है, तो एक मंडे इवन आपका और एक मंडे आपका, रेडी हो जाओ, हम लोग करते हैं। हाँ मैम, और नीलिमा की भी हेल्प ले लूंगी क्योंकि शी इज प्रो। इवन वो अपना प्रोडक्ट भी कंपोस्टिंग का ही सेल करती है, तो शी विल हाँ वेरी हेल्पफुल फॉर हाँ दिस हाँ, सेशन। डेफिनेटली। मैम, वो आप बोल रहे थे कि कोई एक जो लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी सर ने जो कुछ लॉन्च किया था, जिसपे इस साल हम लोगों का कुछ होने वाला है, जहां हम लोगों को लाइव जाना पड़ेगा, वो कब क्या होने होने वाला है? वाला है? बायो एंट्री। अ, हाँ, बायो। लास्ट आपने बताया था मैम, मैं एक्चुअली वो टॉपिक भूल गई हूँ। बायो तो एंट्री लॉन्च किया था लास्ट ईयर तो। हाँ, हाँ क्योंकि इसलिए कि जैसे इस बार हिमाचल में मैं नहीं आ पाई वक्त पे, वो रिजर्वेशन हाँ। और बहुत सारी चीजें, तो अगर वो पता चलता है तो हम अच्छा, लोग वो भी। देहरादून वाला प्रोग्राम वो हाँ हाँ नवंबर में है, हाँ 28, 29, 30। दैट इज द वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ मैम, वो कौन से मंथ में मैम? नवंबर। नवंबर 28, 29 एंड 30th। ओके ओके मैम। तो उसमें बायोएंजाइम को लेके आप क्या करना चाह रहे हो? मैं, पता है क्या मेरा प्लान है, कि पूरे जो हमारा वेन्यू रहेगा ना, तीन तीन दिन का, तो एवरी कॉर्नर ऑफ द वेन्यू वी शुड हैव समथिंग। तो अलग अलग एक्टिविटीज हमें डिसाइड करने, ईच वन ऑफ अस विल हैंडल वन वन दैट पोर्शन। कहीं पे हम लोग वर्कशॉप लेंगे, कहीं पे पेपर प्रेजेंटेशन होगा, सो पीपल हैव टू टॉक अबाउट दो पेपर प्रेजेंटेशन, टॉक अबाउट द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव डन, द केस स्टडीज को डिस्कस करना वो होएगा। कहीं पे अपने प्रोडक्ट्स को, अपने जो हम लोग कर सकते हैं, जो नॉर्मल घर में यूज हो सकता है, वो प्रोडक्ट्स को लेके बात होगी। कहीं पे, मतलब ऐसे हमें सोचना पड़ेगा, कहीं पे हम लोग सेल्फी डाल रहे हैं, सेल्फी पॉइंट एंड ऑल दैट। सो एवरी कॉर्नर ऑफ द इवेंट मस्ट हैव समथिंग ऑन बायोएंजाइम। हम्म तो देख लो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। इवेंट का 3 दिन का इवेंट होएगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड आई एम ट्राइंग टू कॉल सम स्पीकर्स फ्रॉम मलेशिया ऑल्सो इस इवेंट के लिए, बढ़िया। है ना। और अगर कहीं पे हमें स्टॉल, मतलब कोई स्क्रीन वगैरह अगर मिल जाता है ना, तो वी विल शेयर सिक्वेंशियल वीडियोस, मैसेजेस, और जो जो हमारे केस स्टडीज हैं उनके पिक्चर्स, उनका पीपीटीज जैसा बना बना के ना, विच कैन कीप रनिंग। सो लॉट ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, लेकिन नवंबर में है, उससे पहले भी बहुत काम है, मुझे एजीएम खत्म करना है। तो मिल। हम्म हम्म। ठीक है। मैंने अगर स्क्रीन खरीद लिया मैं भी अपने लिए एक सोचू डिजिटल स्टैंडी लेने की। ओके, गुड। लाइट वेट लेना, ताकि आप देहरादून लेके आ सको। हाँ हाँ मतलब वो कैरी करने के लिए ना। हाँ, है ना। ओके। ठीक है। ओके, गुड नाइट। चलो बाय गुड नाइट। बाय। Thank you. Good night, बाय everyone. बाय। गुड नाइट।